हाय। मेरा नाम अनमोल दास है और मैं तेजी मंदी में हेड ऑफ रिसर्च हूँ। टुडे मैं आपको Q3 जो क्वार्टर रिजल्ट्स बीते इन पर एक अपडेट देने आया हूँ और फ्यूचर मार्केट में क्या आउटलुक रहेगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स टू ऑलमोस्ट अ ईयर। सो उसके बारे में कुछ अपडेट देते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट द सेशन। सो talking about how the performance of Nifty was during the past week and past month. So we saw a lot of volatility and also the Adani Hindenburg issue also was affecting the market along with the time of it just a week before the union budget. So in the Q3 Nifty, we saw that the Nifty earnings grew by 11% year on year. However, BFSI सेक्टर यानी मोस्टली बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स को अगर हटा देते हैं तो निफ्टी अर्निंग्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर ग्रोथ हुआ। इसमें मेन जो सेक्टर्स ड्रैग किए निफ्टी के परफॉर्मेंस को ज़्यादा, उनमें थे ऑयल एंड गैस सेक्टर और मेटल सेक्टर। जहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने देखा 19% डिक्लाइन बिकॉज लास्ट ईयर अगर हम याद करें तो ब्रेंट ऑयल वाज अबव अबाउट $100 अराउंड एट दिस टाइम। एंड करेंटली अगर हम बात करें मेटल्स की तो metals also were trading a lot higher, almost 15 to 20% हायर। तो अभी जो हम देखते हैं मेटल्स के प्राइसेस, इसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई है। मेटल्स कंपनीज के प्रॉफिट्स काफी तेजी से श्रिंक हुए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर बिकॉज सारे सप्लाई लाइंस ओपन हो गए, चाइना भी रीओपन हो गया एंड समहाउ यू कैन से दैट कि जो डिमांड सप्लाई मिसमैच चल रहा था जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत हाई थे इन ग्लोबल कमोडिटीज के, तो ये डिमांड सप्लाई मिसमैच अब काफी हद तक पूरा हो गया है। तो दैट्स व्हाई द प्राइसेस हैव करेक्टेड एंड बिकॉज हमारे निफ्टी में काफी सारे मेटल्स और ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, तो इसकी वजह से जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हमने देखा था लास्ट ईयर, इस साल निफ्टी में हमने वो प्रॉफिट्स नहीं देखे। ईयर टू डेट बेसिस की अगर बात करें तो 2023 के स्टार्ट होने के टाइम से अभी तक में हमने निफ्टी आईटी में सबसे बेस्ट रिटर्न्स देखे, अबाउट 8.5%। एंड दिस वाज बैक्ड बिकॉज ऑफ द रैली दैट वी सॉ इन नास्डाक। नास्डाक इज अ यूएस बेस्ड इंडेक्स एंड इट इज अ टेक हैवी इंडेक्स। टेक्नोलॉजी सेक्टर के बहुत सारे जो बड़े ग्लोबल कंपनीज हैं विच इंक्लूड्स द फैंग स्टॉक्स, नास्डाक में वो सारे स्टॉक्स हैं। और हमने देखा कि लास्ट एक महीने में फ्रॉम द लाइक्स ऑफ एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, all of these companies did very well in the last 1 month to 1.5 month since the beginning of 2023। एंड इसकी वजह से जो टेक स्टॉक्स में बूम आया बिकॉज ऑफ जो ले ऑफ्स के बारे में हम न्यूज में सुन रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट ने 10%, गूगल ने 10% बड़े बड़े जो ले ऑफ्स किए हैं इन लोगों ने। तो ये टेक ले ऑफ्स की वजह से एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में काफी हद तक अब उनको बेनिफिट आएगा, मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट्स होंगी। तो इसकी वजह से वहाँ टेक सेक्टर में एक रैली देखने को मिली और उसी रैली का एक काइंड ऑफ यू कैन से कि रिफ्लेक्शन था हमारे इंडिया में भी। नाउ गोइंग अहेड टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स। सो सेक्टरल परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं कि कैसे 2022 और 23 में अलग अलग सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। तो वी कैन सी दैट इन 2022 banks were outliers, especially the public sector banks की अगर हम बात करें तो they had performed very well, but in 2023 by now very much it is that rising interest rate की वजह से people are getting skeptical that the asset quality might get affected or impacted in the coming quarters। तो इस कंसर्न की वजह से और अलॉन्ग विद जो पीएसयू बैंक्स में हमने रैली देखी थी, इसी के बीच जो अदानी हिंडनबर्ग न्यूज आया तो उसकी वजह से भी एक छोटा सा यू कैन से अ क्लाउड केम above the PSU banking sector, that how much of exposure that they have towards Adani groups। सो इन चीजों की वजह से और कुछ जो न्यूज फ्लोज जो हुए,
इनकी वजह से एक हमने यहाँ पर एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है. I will explain something more on the banking sector because of the rally and the focus that the PSU banks had last year. तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री सेगमेंट वाइज भी अगर देखें तो यू कैन सी दैट इट वाज द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडेक्स एंड which had given enormous returns last year compared to the private sector banks जिन्होंने about 10-15% का ही रिटर्न दिया compared to that public sector banks gave returns of more than 40%. सिमिलरली अबाउट लास्ट के हमने अक्टूबर से अराउंड देखा कि कैप गुड्स में एक नया रैली आया लास्ट ईयर और दैट हैज गिवन देम मोर देन 30 to 40% ऑफ रिटर्न्स since the last 3-4 months. Now talking about the quarterly performance of the different sectors. So banks have been kept posting very good results. इनके profits काफी increase कर रहे हैं. PSU बैंक्स में हमने देखा 10% के अराउंड करेक्शन हुआ है ऑन ईयर टू डेट बेसिस और इसका मेन रीजन इज द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स. Outlook, talking about banks, we would suggest someone should avoid entry into smaller PSU banks at current valuations because we believe that the smaller PSU banks which have higher asset quality concerns that may also start coming up if the interest rates keep going on higher from here on. Because already हमने देखा कि inflation rate has increased in January back over 6%. So the RBI may again consider in its April meeting that they may go for another hike. Talking about the private banks, we are very confident on the larger private banks and a couple of small but not small private bank, but smaller than the larger ones, but still selectively picking like the likes of HDFC, ICICI, Axis. These kind of large private banks are doing very good, and we have seen in the last quarter how बिकॉज ऑफ द राइजिंग इंटरेस्ट रेट अपने एसेट क्वालिटी को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने अपनी क्रेडिट अंडर राइटिंग नॉर्म्स को फिर से पहले के जैसे स्ट्रिक्ट कर दिया है विच वॉज प्री कोविड नॉर्म्स दे हैड. And in current scenario, we will not recommend anyone to make any fresh entries into NBFCs because जब इंटरेस्ट रेट्स राइज करते हैं तो NBFCs के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो हो जाता है उनके लिए दैट ऑल्सो राइजेस and their spreads squeezes and that will lead to lesser margins and lesser bottom line. सो हियर यू कैन सी दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपने डिपॉजिट ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें मतलब एक डिक्रीज आया है मतलब नॉट डिक्रीज बट द स्लोनेस एंड कंपेयर टू दैट जो प्राइवेट बैंक्स है सो वी categorize new private sector banks as the HDFC, ICICI, Kotak, Axis. These are the new private banks, while the old private sector banks include the likes of Federal Bank, Bank of Karnataka Bank, and few others like Karur Vysya and others. So these banks which were earlier also private but had not grown as fast. So they are the old private sector banks, and we can see that the private sector banks are increasing their loan book as well as their deposits at the same time compared to the PSU banks who are trying to keep their cost of funding low, and for that reason they have kept their deposit rate increase slow. So डिपॉजिट्स ग्रोथ जो है वो स्लो करेंगे तो कम डिपॉजिट्स आएंगे, कासा रेशियो भी कम रहेगा और डिपॉजिट्स के बदले उन्हें इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा. सिमिलरली हम देख सकते हैं कि NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम में भी क्यू ऑन क्यू ग्रोथ जो है वो PSU बैंक्स में पहले के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़ा कम हुआ है. कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स हम देखते हैं कि ये ज़्यादा है एंड ओवरऑल इंडस्ट्री एवरेज से भी जो है PSU banks are lesser. So somehow we believe that among the PSU banks, it will be the larger PSU banks. SBI के बाद के जो next 5 to 6 banks हैं, जिनके पास about 5,000 plus
branches हैं across India. So these will be the banks where we can see some gradual uptrend going on for next 1 year or so. But apart from them, this for the smaller PSU banks, we would recommend caution. And इन स्मॉलर पीएसयू बैंक्स में मे बी हम नेक्स्ट फेज में रैली ना भी देख सकें. टॉकिंग अबाउट अदर सेक्टर्स, सो ऑटो एंसिलरी में हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे इस क्वार्टर में. टाटा मोटर्स ऑल्सो केम बैक इनटू प्रॉफिट्स आफ्टर 8 क्वार्टर्स. एंड ये जो ऑटो सेक्टर में हमने अर्निंग्स देखा, इट वाज अप 15.3% इन CY22, and this year till now it is 4.2% up the auto index. And on an outlook basis, we are bullish on auto and auto ancillary sector. And इसके रीजंस जो है मेन वो ये है कि डोमेस्टिकली ऑटो सेक्टर को नेक्स्ट BS6 जैसा कोई नया हेडविंड नहीं है. BS6 has been adopted completely. And also EV के जब न्यूज़ आए थे स्टार्टिंग में 2018-19 में, that the advent of electric vehicles will disrupt the auto industry. We didn't saw anything like that happen very that quickly that it was projected. एंड ईवी की जो अडॉप्शन है ये ग्रेजुअली बेसिस पे हो रही है. गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी अब पहले के मुकाबले ईवीज के लिए हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं रह गए हैं, बिकॉज पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स ईवी ऑन देयर ओन मोर rather than just for incentives. मैक्रो सिनेरियो भी अब पहले के मुकाबले स्टेबल है. देयर इज नो ऑल इकोनॉमीज आर ओपन. सो एक्सपोर्ट्स भी जो हमारे यहाँ से ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट्स होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. एंड द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द डोमेस्टिक ऑटो डिमांड इज डूइंग वेरी वेल. कमर्शियल व्हीकल्स की अगर बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में कमर्शियल व्हीकल्स डिमांड इज वेरी गुड एंड इट इज ग्रोइंग वेरी वेल. प्लस जो गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, which will about 15 lakh or so government vehicles are going to be dismantled by April of this coming April. So that will also generate a lot of commercial vehicle demand from the government side. Next is talking about the IT services company. सो IT सर्विसेज कंपनीज का हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स आया. एंड मैनेजमेंट वेयर cautiously optimistic. Mostly management were trying to refrain from giving a very positive or aggressive guidance. But what was good was that the Nasdaq index rally that happened in the US and global markets, we saw a reflection of that in the Indian markets. And the reason for that is here, the improving attrition rates in the last quarter that we saw across all the IT companies. So from TCS to Persistent Systems, we can see that, I mean, apart from barring TCS, whose attrition rate was not actually that high compared to the other companies, but still, we can see that almost 200 basis points of improvement in the attrition rates of all the IT services major companies. एंड आईटी कंपनीज की मेजर एक्सपेंस जो होती है वो एम्प्लॉयज की तरफ ही होती है. तो जब इनके एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में अबाउट यू कैन से दैट एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में अगर 200 बेसिस पॉइंट्स यानी 2% का इम्प्रूवमेंट आ रहा है एट्रिशन रेट्स में, तो एक्सपेंसेस में भी उसका एक लगभग बराबर सा इफेक्ट आएगा. तो एक्सपेंसेस को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 से 2% के बीच पर क्वार्टर बेसिस इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स वो नीचे आ सकते हैं. और जैसे जैसे एक्सपेंसेस नीचे आएंगे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, their margins will improve. So you can see that some of the IT companies had already seen margin improvement this quarter, and we are expecting that in the coming quarters, some of the more IT companies start showing healthy margins. Yes, in terms of growth, the concerns are still remaining, but we believe that the passing winter season after this quarter, when the summers will come, there will be more of business in Europe, and also the war in Ukraine is somehow getting subsided. तो यूक्रेन वार अगर जैसे जैसे ये इसका इफेक्ट कम से कम होता जाएगा यूरोप में,
business will be becoming more and more, business as usual as it used to be. तो वहाँ पर भी वो कंसर्न्स खत्म हो जाएंगे. यूएस इकोनॉमी इज ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड एंड दे आर ग्रोइंग. So the demand from the North American market is already there. So in that way, we can say that we are getting more and more bullish on the IT sector, services sector in the coming time. Talking about the retail and consumption sector. So retail and consumption consumer discretionary sector, they posted a little lower than estimated quarterly numbers for the last quarter. This disappointment was because generally थर्ड क्वार्टर में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं रिटेल सेक्टर से, बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन्स जो होते हैं अक्टूबर एंड दिसंबर में, जो फेस्टिवल्स होते हैं, न्यू ईयर, क्रिसमस, लॉट ऑफ pujas in the month of October, and Dhanteras also, where jewelry is a very big thing and commonly purchased. तो इन चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई थे रिटेल सेक्टर से, एंड ऑल्सो पेंट अप डिमांड को लेकर की बातें थी कि मार्केट में, और प्लस मार्केट रिपोर्ट्स और मार्केट चैनल चेक्स जो हमें मिले थे, मार्केट को जो आया था स्ट्रीट पे, वो काफ़ी पॉजिटिव थे. बट कंपेयर टू दैट, वी सॉ दैट द रिटेल कंपनीज वेर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन रेट्स. People were visiting malls, going out into the marketplaces, but they were not spending as much as they used to in earlier times. So because of that, there was margin pressure, and because Q3 जो कि सबसे strongest क्वार्टर होता है रिटेल सेक्टर के लिए, बिकॉज Q3 में इतना अच्छा नहीं आया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले भी कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन प्रेशर रह सकता है रिटेल सेक्टर में. हालांकि सिलेक्टिव पिकिंग्स कर सकते हैं इसमें, सीजनल चॉइसेस, जैसे कि अभी गर्मी के दिनों में बहुत सारी कंज्यूमर अप्लायंसेस कंपनीज जो हैं वो काफ़ी फोकस में आ जाती हैं, बिकॉज दे स्टार्ट गेटिंग गुड ट्रैक्शन फ्रॉम द मार्केट, और अच्छे नंबर्स की भी उम्मीद रहती है. Talking about the manufacturing and other sectors. So we saw very good numbers by the manufacturing sector, especially the capital goods sector and the electrical equipment sector. So high input cost के तरफ वजह से इन पे थोड़ा impact रहा margins में, but overall जो है order inflow कैपिटल गुड सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर वी हैव द इलेक्शंस. सो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुश वेरी हार्ड on all pedals in the infrastructure segment. So they are making as much as rapid execution of all infrastructure projects, as much as they can complete before the next year's election. And for that reason, capital goods segment, irrigation, water projects, हाईवेज, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें अभी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा आ रहे हैं. तो इस वजह से अभी ये सेक्टर जो है वो काफ़ी फोकस में बना रहेगा नेक्स्ट 1-2 years, एंड वी आर पॉजिटिव ऑन दैट विद दैट थिंग इन माइंड. नेक्स्ट हम जो कुछ सेक्टर्स काफ़ी टाइम से चले नहीं हैं, लास्ट ईयर भी काफ़ी इम्पैक्टेड रहे बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, जिनमें से कि कुछ ग्रोथ सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह. इनमें अभी रिसेंटली थोड़ी बहुत खरीदारी देखी गई बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वॉर, थोड़ा कम होता हुआ अब, एंड प्लस द विंटर्स भी अब खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट. तो यूरोप में जो नेचुरल गैस की डिमांड को लेकर कंसर्न्स थे, और नेचुरल गैस की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनली वो भी नीचे आ गए हैं, ऑलमोस्ट नीचे, जो मतलब प्री वॉर प्राइसेस जो थे उन लेवल्स पे. तो इस वजह से काफ़ी अब एक्सपेक्टेशंस है कि वापस से ये ग्रोथ सेक्टर्स जो हैं ये वापस से पिकअप कर सकते हैं. हालांकि अभी तक नंबर वाइज वी आर नॉट सीइंग मच ऑफ दैट हैपनिंग इवन इन द लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स. बट जो खरीदारी हुई है इस सेक्टर में लास्ट एक महीने में, उसे देखकर ऐसा कुछ ट्रेंड लग रहा है. Talking about the general macroeconomic scenario of India, IMF has maintained their projections for the Indian GDP forecast, and that is for India's GDP to grow at 6.8%, which will be the fastest among the larger economies.
Again, talking about the CPI inflation, and here also we can see that compared to several of the European and advanced economies, our inflation rate at 5.88 and 5.72% in the previous months were very low. We have not included the month of January in this one yet. This is the currency indicator here, and we can see that our currency has not deteriorated as much as the many of the advanced economies, including some of our developing peers adjacent to our country like Pakistan and Sri Lanka. तो इंडिया की करेंसी जो है हम देख सकते हैं ओनली अराउंड 9 to 10% डिटोरिएट हुआ है in the last 1 year. So compare that with Pakistan or Sri Lanka, the deterioration is very high. सिमिलरली जापान की भी करेंसी जो है या चाइना की, इनमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे टाइम पैनिक वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री में जीडीपी ग्रोथ रेट और ओवरऑल ग्रोथ इफेक्ट हुआ. कंपेयर दैट विथ इंडिया, वी हैव मेंटेन्ड अ काइंड ऑफ very stable currency management. Inflation rate, we can see that in the January month, inflation has again spiked. This was majorly because of food inflation. Food inflation again increased to 5.94% in the month of January, and food inflation makes up about almost half of the inflation rate calculations. So वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर गुड क्रॉप्स आए इस सीजन में, तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा, बट अदरवाइज इट मे अगेन शूट अप, एंड एनी लेवल बिटवीन 4 to 6% इज समथिंग जिसमें आरबीआई रिलैक्स रहेंगे, एंड दे माइट नॉट गो फॉर अ रेट हाइक. बट अगर इन्फ्लेशन रेट अगेन कुछ महीनों के लिए 6% से ऊपर रहा, then again we can expect that RBI will again go for higher rates. Now, this is the GDP growth rate of India. Even the RBI has given their projections. In the last quarter, it grew by 6.3%, and in this Q3, we are expecting a better GDP growth rate. Now, this is the monthly GST collections. We can see that we have been doing more than 1.5 lakh crore of GST collections almost every month in the past several months. And because of that, the government spending की जो expectations हैं, ये भी आगे continue रहेंगे. GDP growth rate with the IMF estimates. So for FY22, we saw we got about 8.7% of GDP growth rate, and in FY23 and FY24, the IMF is expecting कि GDP growth rate will soften a bit. So that is the reason because कि FY22 में पिछले साल का जो बेस इफेक्ट था वो काफी नीचे जीडीपी होने की वजह से हायर जीडीपी ग्रोथ रेट हमें दिखा था. Overall summary speaking, we are seeing that Indian economy is probably one of the best performing economy among all the other major economies across the whole world, and we are in a very good structural upcycle where all the things are ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर से they can only shoot up. We are not seeing any more dangers or any more panics to happen in the domestic economy. GDP growth rate is also expected to be very strong in the next 4 to 5 years, and that is a very good thing because somehow the markets always mimic the GDP growth rates. अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो ही हम मार्केट को ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओवर द लास्ट 7 years, जब हमने देखा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 2012 से लेके 2019 के बीच में, corporate profits were growing by just 4% on a CAGR basis. But since 2019 and onwards, we are seeing that the corporate profits have been growing almost 15% on a CAGR basis. And if that continues, then that means that the corporates will also be doing a lot of capex, and that will be good for the economy as well as for their business expansion. The more the business gets expanded, जितना ज़्यादा business उनका फैलेगा, उनका business का size बड़ा होगा, the market cap and the company's valuations will also increase.
गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स जो है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हम देख रहे हैं दिस ईयर यूनियन बजट में हमने ऑलरेडी देखा कि हाउ गवर्नमेंट ने रेलवे बजट को 1.4 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2.4 लाख करोड़ कर दिया। जो कैपेक्स साइकिल था गवर्नमेंट का उसको गवर्नमेंट ने 33% इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ कर दिया। And these kind of huge jumps are being done by government, especially for the infrastructure segment and for capital expenditure. That is good. And this time around, we are starting all this cycle at lower interest rates compared to the historically जो हमारे country के interest rates होते थे, they used to be more than 7.5%. Still, we are about at around 6.5%, and we are expecting that some kind of a uh, roof about less than 7% expectation is for the interest rates in the long run. Talking about Teji Mandi. So Teji Mandi is an advisory and it's a subsidiary of Motilal Oswal. We provide stock market advisory. We have two portfolios for our clients, and these portfolios are fundamental portfolios and sector agnostic. So we track data from across different sectors, and we get their financial study. We screen their data, financial performance, and then going through that and going through the management's reputation, what kind of business they have been in, and how have been their performance in the long run. So that's how we approach our stock analysis process. This is disciplined rebalancing. So we have a very strict criteria that whenever there is a quarterly result season, we review all the company's results right on the day when they come, and we see whether any kind of a rebalancing is required based on the quarterly results or not. Then we have a, very complete screening on any kind of a corporate event that happens with any of the companies in our portfolios. And whenever there is any kind of a headwind either to the company or to the sector, then we take a call and we switch to other better investment opportunities. Risk mitigation framework. So we have a very strict risk mitigation framework. Whenever there is too much of bad noise regarding any kind of a sector, we do understand that any negative kind of a news flow for any sector means there will not be much of a market performance for that sector and for that stock as well. So we try to avoid those stocks, and if any stock in our portfolio is facing such a threat, we try to switch to other investment opportunity. Liquidity management. So if any stock is not performing well, the company is not able to manage and channel their cash flows properly to get the better results in terms of quarterly performance and the annual performance, then we take a call whether to stay with that or not. Then we see if the market is very highly volatile, then there is any global event or the external thing which can happen and which may impact our portfolio or certain kind of a stocks, then also we take a call. A benchmark of internal prices is that if a stock falls by 15% or more from our entry price, then it comes into our picture that this is below, and then we take a call whether to stay with it or not. So this is our flagship and multiplier portfolio. You can see our 2-year CAGR growth of flagship returns of about 30% and multiplier portfolio with 34.7%. So the flagship portfolio is sector agnostic, and it gives a mix of small, mid cap and large cap stocks. And this come from the Nifty 500 basket, and we take two kinds of approach to get these stocks in our portfolio. One is the tactical bets. So this comprise about 20 to 25% of our portfolio, and these bets are taken on those companies
for duration of 3 to 6 months. So whenever there is any news on any sector or any company, and we see that going to affect its pricing in the market positively, then we take a position in such kind of a stock. This could be anything like government policy affecting or benefiting any particular sector, like government's ban on electronic products from China, or the government's incentives for the renewable sector in India. So these kind of things. Then there are industry tailwinds, like if there was a good rainfall and the agriculture is expected to be good, then we could take a good position in some kind of a agricultural company or food products company. Then we have long-term winners. So these comprise about 75 to 80% of our portfolio, and these are the companies with very stable and a growing kind of a profit and revenues. So these companies we invest with a time duration of minimum of 12 to 18 months, and we see their return on equities to be upwards of 15 plus percent, so that we do get a good return, as well as our any negative thing happening, still we are protected. So this is the performance of our flagship portfolio. If you have invested 100 rupees, your returns from flagship will be 193 rupees, compared to the benchmark index's return of 157. This is the flagship portfolio's 1 month, 3 month, and 1 month, 6 months, and 12 months performance. Here you can see we have clearly outperformed. This is the pricing model for the flagship portfolio. Coming to the Teji Mandi multiplier portfolio. So the capital allocation in the Teji Mandi multiplier portfolio is towards small and mid cap focused companies. So, of course, this is a sector agnostic, but the focus is for mid caps and small cap companies which have very high potential to grow in the long run. Here you can see that our multiplier portfolio has given a very high return of about 100 rupees against 100 rupees. You are making 183 rupees over almost 2 years of time, so against the benchmark index of 121. So here also you can see the kind of outperformance that we have done in our multiplier portfolio. This is the pricing model of the multiplier portfolio. Now, we want to give you stocks, name a few stocks which we have exited, and we have made huge gains in these stocks, which includes like ICICI Bank. So we had this company in our portfolio at a price about somewhere around 443 rupees, and we exited at 921 rupees, making almost 110% gains. Similarly, Max Healthcare Institute was there. We entered at 207 rupees and we made gains of 109%. Prince Pipes and Fittings Limited. So here also we made about 50% gains. Similarly with Deepak Fertilizers, again, when we saw that the fertilizer segment is going to benefit a lot because of the Ukraine war. जब रशिया में और यूक्रेन में जो वॉर हुआ, रशिया एंड यूक्रेन बोथ आर वेरी बिग प्लेयर्स इन एक्सपोर्ट मार्केट फॉर फर्टिलाइजर्स, एंड फर्टिलाइजर्स की जो सप्लाई थी, बिकॉज यूक्रेन में वॉर चल रहा था और रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस लग गए थे, तो ग्लोबली फर्टिलाइजर सप्लाईज जो थे वो काफ़ी हद तक चोक हो गए, एंड द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इन ग्लोबल मार्केट्स वेंट अप बाय ऑलमोस्ट डबल. So benefiting from that, most of the fertilizer companies did a good performance and the stocks also rallied. So we also made good gains out of it. Persistent Systems. Now this is a good IT company, and we had made a very good buying of a very low price of 1773 in this, and we booked our exit at 4184 with 136% gains.
Federal Bank. So when the interest rates were lower and the banks were doing very good and they were improving their asset quality, तो फेडरल बैंक ने हमने अपना अच्छा पोजीशन बना के रखा एक लोअर प्राइस पे, एंड till the interest rate started increasing very high, we maintain our position and booked a profit of 40% in the stock. That's all. Thank you.